climate change is actually happening. And this is just the beginning. आने वाले कुछ ही टाइम में सीन बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि हम अपनी हरकतों से बाज तो आ नहीं रहे हैं. कार्बन एमिशन बढ़ता जा रहा है एंड वी आर डूइंग नथिंग अबाउट इट. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, पिछले 10,000 सालों में धरती का टेम्परेचर बढ़ा नहीं है, बट सिंस द प्री इंडस्ट्रियल 19th सेंचुरी ये टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ चुका है और अब बहुत तेजी से हम 1.5 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ रहे हैं. 2 डिग्री पर पहुंचते पहुंचते थिंग्स विल एक्चुअली बी डिजास्ट्रस. यू मस्ट बी थिंकिंग कि 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ऐसा भी क्या हो जाएगा. टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, at 1.5 degree increase, Arctic ice will still be there during most summers. But just a half degree more और Arctic की summer ice पिघलने लगेगी. That means polar bears, whales, seals and seabirds will lose their habitats, mostly starve to death and go extinct. At 2 degree increase, urban population will be exposed to severe water shortage. Shimla, Bengaluru, Chennai, Delhi और कितनी ही cities में water shortage already शुरू हो गई है. एक तरफ severe droughts होंगे, while on the other hand sea level rise होने से coastal cities डूबने लगेंगी. Small island countries तो गायब हो जाएंगी. India and Maldives have already lost a few small islands due to global warming. 1.5 degree increase पर 6% insects, 8% plants और 4% vertebrates will go extinct from the face of the earth. वहीं 0.5 degree और increase पर ये numbers काफी बढ़ जाएंगे. And as we know, insects are vital for pollination of crops. That means in turn effect पड़ेगा हमारी crops पर. There'll be serious food shortage around the world. Extreme weather events की वजह से Indian farmers के suicide rate में increase हमारे सामने है, जहां 1.5 डिग्री पर almost 70 to 90% of coral reef will die. 2 डिग्री increase पर तो coral reefs ocean से पूरी तरह खत्म ही हो जाएंगी, जिसका इफेक्ट कोरल रीफ पर जीने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से शुरू होकर पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन पर दिखेगा. कोरल रीफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फूड एंड कोस्टल प्रोटेक्शन फॉर 500 million people worldwide. If they go extinct, that would mean coastlines will become more susceptible to damage and flooding from storms, hurricanes and cyclones. Tropical countries की तो वाट लग जाएगी. Basically, we'll not just have to adapt to one thing at a time. We'll be adapting to everything shifting at once. और ये सब बातें हवा में नहीं हो रही हैं. These are not hypothetical situations. This is the actual reality which is happening right now. Current situation ये है कि 2015 पेरिस एग्रीमेंट में जो दुनिया की कंट्रीज ने मिलकर कार्बन एमिशंस कम करने के वादे किए थे, वो वादे अगर पूरे भी कर दिए जाएं, तब भी वर्ल्ड इज मोस्टली गोइंग टू गो वार्मर बाय अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस और मोर बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी. And the world is not prepared for it. According to the UN's recent report, आने वाले मात्र 12 सालों में global greenhouse emissions need to go half than what it is today and be completely zero by 2050. Otherwise, we are f***ed. The report also specifically points to India, highlighting that it will be one of the most severely hit countries worldwide from climate change. Governments need to take actions that have never been taken before. Basically, all the coal plants and petroleum fuel-based vehicles on the entire planet would need to be quickly replaced with zero carbon alternatives. And not just that, according to the report, the world will also have to develop and deploy technology to remove billions of tons of carbon dioxide from atmosphere every year. Nahi to India, China, Bangladesh, Japan, US, Indonesia, Egypt, फिलीपींस और वियतनाम में 2040 तक 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग कोस्टल फ्लडिंग से जूझ रहे होंगे. It's high time that we act now, or it might get too late. China is number 1 carbon emitting country. US is number 2. And India, number 3. While Chinese, being smarter than the rest, have made environmental protection as their number 1 agenda, US के डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब का तो दिमाग ही फिर गया है. या बोले दिमाग है ही नहीं. US is not just one of the highest carbon emitting countries, but also tops in the per capita carbon emission. इंडिया और चाइना में एक इंसान का एवरेज कार्बन फुटप्रिंट 1.5 और 6.5 मीट्रिक टन है, वहीं यूएस में 15.5 मीट्रिक टन है. बट इन सर के हिसाब से क्लाइमेट चेंज इज नॉट रियल. उसको लगता है जैसे भूत वूत कुछ नहीं होते, वैसे ही क्लाइमेट चेंज भी कुछ नहीं होता. ही कंसिडर्स इट अ कॉन्स्पिरेसी बाय अदर कंट्रीज अगेंस्ट द यूएस. लाइक सीरियसली, किस बेवकूफ को प्रेसिडेंट बना लिया है यूएस वालों ने? वैसे हमने भी कोई झंडे नहीं गाड़े हैं यहाँ पर. लुकिंग एट द करंट पॉलिटिक्स सिनेरियो इन इंडिया, climate change policies doesn't seem to be the number 1 priority. Instead, economic growth has always been on the top of the agenda, and that too on the cost of our environment. 2014 में मोदी जी का कहना था that it isn't the climate that has changed, but rather our ability to deal with climate. वाह मोदी जी वाह.
इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नाम पर जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं. ट्रीज पुल आउट CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर अस. ये तो थर्ड क्लास के बच्चे भी जानते हैं. बदलते वक्त के चलते गवर्नमेंट ने आजकल अपने आप को ग्लोबल स्टेज पर एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्लेयर की तरह जरूर प्रोजेक्ट किया है. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के नाम पर सेस भी लगाए गए हैं. बट ग्राउंड रियलिटी इज फार फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर सरकार ने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स की रिक्वायरमेंट को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है. कितने ही पेंडिंग प्रोजेक्ट्स दैट वर ऑन होल्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेविंग द एनवायरमेंट हैव बीन अप्रूव्ड. 2010 से 2018 के बीच में करीब 80,000 करोड़ रुपया have been collected as clean energy cess, जिसमें से सिर्फ 30% यानी कि करीब 24,000 करोड़ ही नेशनल क्लीन एनर्जी फंड में ट्रांसफर हुए और उन 24,000 में से भी सिर्फ 7,000 करोड़ प्रोजेक्ट्स में यूज हुए हैं. दिस वाज अ नॉन लैप्सेबल फंड. डैम इंपॉर्टेंट इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज. नॉन लैप्सेबल का मतलब कि अगर फंड में पैसा बचता है तो वो किसी और फंड में ट्रांसफर नहीं हो सकता. But according to a news report, the remaining 56,000 crore were to be diverted from the fight against climate change to the losses incurred due to introduction of GST. Shows the seriousness with which we are dealing with the issue at hand. We still have some time to make it less bad, but we really have to act right now. First thing to do is that those of us who don't know about this issue, let's educate ourselves and people around us. Share this video right now. Secondly, let us reduce our personal carbon footprint to as low as possible. अभी नहीं तो कभी नहीं. हमारे बच्चे और उनके बच्चे सबकी वाट लगने वाली है. There is no time to waste. Share this video. Comment below on what you think about this issue.